Hello everyone, welcome to my channel French with Preeti. So today we are learning how to tell time in French कि हम French में time कैसे बताते हैं. Okay, so first of all we will learn how to ask what is the time. सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि कैसे हम ये पूछते हैं what is the time right now. Okay, so we say quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Okay, or we can also say il est quelle heure? Okay, so it means what time is it? Fine, इसका meaning है what time is it? So let's start with 1 o'clock. If it is 1 o'clock, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? Il est une heure. Il est une heure, which means it is 1 o'clock right now. Okay. So let's take another example. So this is 1. For example, right now it is 8 o'clock. Okay. Right. Okay. So इसे हम कैसे बोलेंगे? Il est, एक को क्या बोलते हैं? With. So il est with heure. Correct? I have added an extra s because 8 is plural, right? So 8 o'clock. So il est 8 heures. Now, if it is 8 o'clock and 5 minutes, 8:05. So how will you say that? You will say il est 8 heures 5. Il est 8 heures, 8 o'clock 5. Correct. Okay. If it is 8:15, il est 8 heures 15. तो आपने यहाँ क्या नोटिस किया? मैंने लिखा il est, यहाँ पे जो नंबर है वो लिखा, मैंने heure लिखा और मैंने यहाँ पे minutes लिख दिए. Okay, this is hours and this is minutes. So il est 8 heures 15, 8:15, right? इसको लिखने हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं it is 15 minutes past 8, right? तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं एक और तरीके से? il est 8 heures et quart. Okay, il est 8 heures et quart, which means it is 8 o'clock and a quarter, like a quarter past 8, right? Quarter बीत चुका है 8 बजे हुए. So it is 8 heures et quart, right? Okay. So similarly, if we have 8:20, right? So how will we say? Il est 8 heures 20. Il est 8 heures 20. This is hour, this is minutes. Il est 8 heures 20. Right? Okay. Now if it is 8:25, then also il est 8 heures 25. For 25 is 25. So il est 8 heures 25. Right? Okay. Now I'll write 8:30. Il est 8 heures. Now how many minutes? 30 minutes. So 30. Right? Il est 8 heures 30. This is one way of telling 8:30. Okay, another way is il est 8 heures et demi. Il est 8 heures. Okay, so il est 8 heures et demi, which means 30 minutes. So demi is like half. Okay, so half an hour past 8 o'clock. So il est 8 heures et demi. Okay, now if I have to say 8:35, so similarly, il est 8 heures. What is 35 in French? 35, right? 35. Il est 8 heures 35. ओके, इसको लिखने का एक और तरीका हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अभी
25 मिनट्स बाकी है 9 बजने में, अभी 25 मिनट बाकी है 9 बजने में। तो इसको लिखने का एक और क्या तरीका है, इल ए नवर मुआ, मुआ मीन्स minus, so il est 9 moins, how many minutes are there to 9? 25, right? So it is, okay, so il est 9 moins 25, it is 9 o'clock and minus 25 or less 25, okay, so 25 minutes are still left to 9 o'clock, okay. So okay, same way if you have 40, 8:40, so then also you have two ways of saying, like il est with heure, एक तो यही तरीका है कि हम सीधा मिनट्स लिख दें, 40 को क्या बोलते हैं, 40, एक तो ये तरीका है सिंपल, और il est, now it is 20 minutes to 9, okay, so we will write il est 9 heures moins, and how many minutes are left, 20 minutes, so moins 20, il est 9 heures moins 20, okay, okay, now 8:45, ओके मैं आपको यहाँ पे 8 से बता रही हूँ, आप कोई भी 9:45, 10:45, 11:45 जो हमने यहाँ पे रूल लगाएंगे वही रूल हर किसी टाइम पे, ठीक है, सेम रूल अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 8:45, सो इट इज फर्स्ट हमारा जनरल रूल कि हम सीधा मिनट्स लिख देते हैं, जैसे कि il est with heure 45, right, simple, 45 45, right, now it is 15 minutes to 9, right, तो इस लिखने का एक और तरीका क्या है, il est 9 moins 15, il est 9 moins 15, ओके, एक और, il est 9 moins la quart, okay, we can also say there's 15 minutes, sorry, that 15 minutes are still left to 9, we can also say there's a quarter is still left to 9, okay, or like a quarter to 9, right, a quarter to 9, okay. इसको लिखने का एक और तरीका है, लाइक हम इसको कह सकते हैं 45 मिनट्स हुए हैं, बट हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि il est with heure and through a quart, il est with heure through a quart, which means it is 8 o'clock and 8 o'clock 3/4, right, that is why I added an extra s because it is 3/4, right. सो इसलिए हम देखा कि जब हम 45 मीन्स 8:45, 9:45 कोई भी नंबर, जब हम 45 मिनट्स मेंशन करते हैं तो उसको लिखने के हमारे पास 4 तरीके हैं, ओके. नाउ इफ यू हैव 8:50, सो इट इज इजी, राइट, il est with heure, general rule, simply we write 50, it is 8 o'clock and 50 minutes, simple. या दूसरा तरीका, il est कि 9 बजने में कितना टाइम बाकी है, il est 9 heures moins कितने मिनट, yes, moins 10, okay, il est 9 heures moins 10, so it's very easy here, okay. So similarly 55 also, il est 8:55 and il est 9 heures moins 5, so I think आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, okay. So if it is 12:00, okay, which is noon, so how will you say il est midi, simple, noon it's il est midi, and when it is रात के जब 12 बजते हैं, so we say il est, like midnight we say, so it's il est minuit, okay, so il est minuit, okay. Now you see हमारे पास दो तरह की क्लॉक्स होती हैं, एक होती है 12 आवर क्लॉक और एक होती है 24 आवर क्लॉक. सो 12 आवर के अंदर
सपोज अभी दोपहर, अगर हम बोल रहे हैं 8 बजे हैं, ओके, सो इफ यू आर सेइंग इट्स 8 o'clock, सो हाउ विल वी नो इट इज इन द मॉर्निंग, इज ऑफ द मॉर्निंग और ऑफ द नाइट? ओके, सो इफ आई राइट 8, ओके, सो हाउ विल यू नो दैट इट इज मॉर्निंग और इवनिंग? तो उसके लिए हम AM और PM यूज करते हैं, राइट? ये आपको पता होगा कि हम AM और PM का यूज करते हैं. इफ आई राइट 8 AM एंड 8 PM, तो हम फ्रेंच में इसे कैसे बोलेंगे? इन ए with heure du matin. It is 8 o'clock of the morning. Il est 8 heures du matin. So du matin of the morning, it will help us to know that okay कि ये सुबह के 8 बजे हैं. और अगर रात के होंगे तो il est 8 heures du soir. Okay, so il est 8 heures du soir, like it is 8 o'clock in the of the evening, right? Okay, one more thing, for example, अगर दोपहर के बजे हैं, right, like दोपहर के 2 बज रहे हैं, for example 2 PM, okay, so how will we say that? Il est 2 heures, after उनको क्या बोलते हैं? De l'après-midi, right? So il est 2 heures de l'après-midi. So now you see, morning के लिए we use du matin, afternoon के लिए we use de l'après-midi, and for evening we use du soir. Okay, it is important, du matin, de l'après-midi and du soir. Okay, but अगर आपको भी एयरपोर्ट्स पे, स्टेशन पे या पब्लिक अनाउंसमेंट जब भी होती है तो जनरली हम 24 आवर क्लॉक यूज करते हैं, राइट? वी यूज 24 आवर क्लॉक. लाइक जैसे हम दोपहर के 12 बजे, उसके बाद जब दोपहर के 1 बजते हैं तो हम कहते हैं इट इज 13 o'clock. समटाइम्स दे आर रिटन लाइक दैट. ओके, सो हाउ विल यू राइट दैट इन फ्रेंच? सो सिमिलरली यू विल राइट 15. Okay, for example it is 13, right? So it is 13 heure. We can simply write like that. Okay, it's 13 heure. Fine. Now for example, there is one more way of writing 13 heure. Okay, फ्रेंच में हम heure को H से डिनोट करते हैं. Okay, so H से डिनोट करते हैं 13 heure. Okay, 13 heure. और फॉर एग्जाम्पल अगर रात के 8 बजे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? ओके, रात के 8 बजे हैं तो इसको हम लिखते हैं 8 PM, लेकिन फ्रेंच में हम इसे कैसे लिखेंगे? 20 heures, 20 heures और 20 heures. Clear? Okay, so now सो दैट इज़ इट. जो भी हमने आज टाइम पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया है, एंड डू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न टाइम एंड अदर कॉन्सेप्ट विद फ्रेंच विद प्रीति. ओके, बाय.